नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को विद्यासागर क्लास चैनल को समस्त को वेलकम। तो आज आमर जो सेशन रहिबो से सेशन टा तम माने जो माने भी नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स माने अछंती से मानक पई बोली आज हेल्पफुल रहिबो जोडा रे कि आमे कोर नर्सिंग सब्जेक्ट जोडा कि हमर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग बोली आमे कहूचे से सब ऊपर आमे आज किछटा एमसीक्यूज डिस्कशन करबा एंड नॉट ओनली आज रो क्लास देयर विल बी अ सीरीज ऑफ क्लासेस दैट विल बी गोइंग ऑन इन द कमिंग वीक्स जोडा रे कि तमे माने आमे माने सब चैप्टर्स रो माने नर्सिंग ऑफिसर रे आसोथिबा हमर जति भी सब कंटेंट अछि जति भी सब चैप्टर्स अछि से सब चैप्टर्स रो हम डिस्कशन करेबा तार एमसीक्यूज गुडा को डिस्कशन करेबा एंड नॉट ओनली एमसीक्यूज जो एमसीक्यूज रो माने जो क्वेश्चन ता करेक्ट अछि से करेक्ट ऑप्शन को तो देखिबा ही देखिबा ता संगे रे से रिलेटेड जहा जहा सब कांसेप्ट अछि आ ता छडा आ कोन क्वेश्चंस हमर आसी परिबो से सब को मध्ये हम देखिबा हैला। तो आज जो फर्स्ट क्लास रोची जोटा रे कि हमें नर्सिंग कोर नर्सिंग ऊपर हमें एमसीक्यूज रो डिस्कशन करूचे से सब एमसीक्यूज गुडा कर आज फर्स्ट क्लास। तो बिना देरी करी लेट्स कंटिन्यू विथ द अदर एमसीक्यूज लेट्स कंटिन्यू विथ द एमसीक्यू डिस्कशन आउ हमें क्वेश्चन नंबर 1 को जिबा फर्स्ट ऑफ ऑल हैला। तो फर्स्ट क्वेश्चन which of the following is the first step of the nursing process? नर्सिंग प्रोसेस रो फर्स्ट स्टेप कोन एग्जाम एंती तो किछि पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन आसीनी बट वी आर अज्यूमिंग कि हमें 2-3 मंथ्स भीतर हमरो निहाती माने एग्जाम डा हला बडे हमें अज्यूम करके प्रिपरेशन डा करियो हला सेमिति तो किछि स्पेसिफिक डेट नाही बट हमें हाथ रे टाइम रखी गिरी हमें प्रिपरेशन डा करू ठीक अछि। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 which of the following is the first step of the nursing process? Planning, assessment, implementation, evaluation. कौन होबो फर्स्ट स्टेप? क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमर जे कोनसे प्रकार नर्सिंग प्रोसेस रो जो फर्स्ट स्टेप ता रहउची से फर्स्ट स्टेप ता है असेसमेंट स्टेप ता हला। यस एस्पिरेंट थैंक यू ओके बी यस इट इज बी असेसमेंट। एबे मते कोइ परबो व्हाट आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स जोडा कि हमर दरकार पड़े असेसमेंट हला फर्स्ट स्टेप नर्सिंग प्रोसेस रो। तो आउ अन्य जो स्टेप गुडा को अछि हमर एमते टोटल 5 स्टेप अछि ठीक अछि 5टा स्टेप अछि। तो 5 स्टेप्स मानक भितरे हमें केमदे मन रखू ए डी पी आई ई हला। फर्स्ट हला असेसमेंट तापर हला डायग्नोसिस तापर हला प्लानिंग देन आसिला इम्प्लीमेंटेशन देन आसिला इवैल्यूएशन हला। कोनसे भी गोटे नर्सिंग ऑफिसर रो कोनसे गोटे नर्सिंग ऑफिसर रो दायित्व बा नर्सिंग प्रोसेस रो दायित्व हमर कोन यस यस ठीक अछि असेसमेंट सुश्री एस्पिरेट असेसमेंट डायग्नोसिस गोल इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन हां ठीक अछि हला। व्हाट वी डू इज ए टाइप रो किछि हमें टर्म्स गुडा यूज करू असेसमेंट रे हमें असेस करबा जे कोनसे प्रकार डिजीज थिबो ताको असेस करबा ऑब्जर्व करबा तापर डायग्नोसिस करबा डायग्नोसिस माने आइडेंटिफाई करबा से डिजीज टा हमर को वायरस द्वारा हला कि को पैथोजन द्वारा से हमर इन्फेक्ट करिछि तापर प्लानिंग करबा कि प्लानिंग कोन करबा को प्रकार ट्रीटमेंट ताको दिया जिवो देन फाइनली इंप्लीमेंट करबा से प्रोसेस रो इंप्लीमेंट करला पर तापर इवैल्यूएशन करबा फाइनली कि सेटा हमर सक्सेसफुल हला कि न हला ठीक अछि। सो दीस आर द 5 स्टेप्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। Next, question number 2. The normal respiratory rate for a healthy adult at rest is 8 to 10 breaths per minute, 12 to 20 breaths per minute, 22 to 28 breaths per minute, 30 to 40 breaths per minute. What about question number 2? Normal respiratory rate for a healthy adult at rest. Hello, healthy adult at rest. हमें कहूचे कि respiratory rate, respiration हमर दीटा process involve होची। गोटे होची inspiration और गोटे हला expiration. हला inspiration process we see that we inhale the outer air inside of a body और exhalation रे हमें कोन करते ना हमें expel out करते ठीक अछि। तो respiration हमर दीटा process रे involve गोटे होची inspiration आ गोटे होची expiration। inspiration generally हमर 3 सेकंड लागे और expiration हमर 2 सेकंड लागे ठीक अछि। तो टोटल गोटे इंस्पिरेशन बा गोटे हमर जो गोटे रेस्पिरेटरी साइकिल ना हमर 5 सेकंड्स रो साइकिल डा ताकू जदी हमें मॉडिफाई करके देखिबा ए
can vary from individual to individual और accordingly हमर 12 to 20 breath per minute रे रहउची हमर respiratory rate हैला ठीक अछि सुश्री रीना रोजिता ठीक अछि बी राजलक्ष्मी श्रिया बी डन 12 to 20 breath per minute अच्छा मते आ गुटे क्वेश्चन रो आंसर कहलो कि हमें रेस्पिरेशन को मेजर करिया पे बोले गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करू रेस्पिरेशन को मेजर करिया पे बोले गोटे इंस्ट्रूमेंट यूज करू व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हमें जो नॉट एक्जैक्टली रेस्पिरेशन कहबा तो ठीक होबनी ब्रीदिंग को मेजर करबा पई बोली ब्रीदिंग को मेजर करबा पई बोली जो इंस्ट्रूमेंट यूज होची सेटा कोन हबो यस रश्मिता बी इंस्ट्रूमेंट ता कोन हबो के कहि परबो कि ना मो कहबी इट इज स्पाइरोमीटर हैला इट इज स्पाइरोमीटर ए इंस्ट्रूमेंट यूज करके हमें ब्रीदिंग रेट को मेजर करू हैला अच्छा स्पाइरोमीटर हमर सब प्रकार ब्रीदिंग रेट को मेजर करि परिबो बा हमें जति की रेट रे हमें इनहेल करछे जति की रेट रे हमें एक्सहेल करछे जति की रेट रे हमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन करछे जति की रेट रे हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन करछे सब जिंस को मेजर करि परिबो किंतु गोटे वॉल्यूम ऑफ एयर से हमर मेजर करि परिबो नाही से वॉल्यूम ऑफ एयर ता कोन से जो वॉल्यूम ऑफ एयर ता स्पाइरोमीटर हमर मेजर करि परिबो नाही से वॉल्यूम ऑफ एयर ता को कोन कहै जाउची यस स्पाइरोमीटर रोजिता ठीक अछि से जो वॉल्यूम ऑफ एयर को कौन कहा जाए से जो वॉल्यूम ऑफ एयर जोड़ा कि स्पाइरोमीटर कैन नॉट मेजर इट इज रेसिडुअल वॉल्यूम रे माने कोन एटा देखो एटा वेरी इंपोर्टेंट हैला एटा पाखा पाखी हमर 1100 रु 1200 ml रे रेंज करे 1100 रु 1200 ml रे रेंज करे एंड दिस अमाउंट ऑफ एयर इट इज नॉट मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग आवर ब्रीदिंग साइकिल हैला काहे ना ए वॉल्यूम ऑफ एयर हमर लंग्स रे ही थाए ये बाहर को बाहर ही नहीं केबे आउ एटा लंग्स रे ही प्रेजेंट थाए काहे की प्रेजेंट थाए लंग्स रे सो दैट लंग्स ता कोलैप्स न करि जाय हैला माने इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन हम जत्ते फोर्सफुली एक्सपायर करिले मध्य मोर ए जो रेसिडुअल वॉल्यूम बा एत्ते की जो वॉल्यूम ऑफ एयर ना मोर लंग्स रे प्रेजेंट ही थिबो जत्ते चाहे तमे फोर्सफुल एक्सपिरेशन करियो चेष्टा करो एत्ते की वॉल्यूम ऑफ एयर मोर बाहरिबोनी काहे की प्रेजेंट रहउची सेटा लंग्स रे काहे की ना हमर माने प्रिवेंट करिया पे लंग्स रो कोलैप्स को प्रिवेंट करिया पे बोली सेटा प्रेजेंट थाउची आउ पाखा पाखी 1100 रु 1200 ml रे ये रेंज करूची स्पाइरोमीटर द्वारा ये मेजरेबल नुहे काहे की मेजरेबल नुहे अरे लंग्स रो बाहरिले तो मेजर करा हबो मु इंस्पायर कली से जिंस रे जते बेले मोर एयर रो इनफ्लो आउटफ्लो रहउची से जिंस रो मोर स्पाइरोमीटर डिटेक्ट करि गिरी मेजर करि परिबो बट व्हाट अबाउट द अदर वॉल्यूम ऑफ एयर ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर एटा तो हमरो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन प्रोसेस से पार्टिसिपेट ही करूनी तो ये हमर जाना भी पड़िबोनी ना जाना भी पड़िबोनी ठीक अछि क्लियर तो आ रिलेटेड सब क्वेश्चन सही गला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा एबे क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच पोजीशन increases the venous return to the heart in a patient with shock कोन होची एडी गोटे पेशेंट को शॉक अछि शॉक रे अछि से शॉक इन द सेंस इलेक्ट्रिक शॉक हला कि कोन हला या फिर बॉडी रे कोनोसी प्रकार हमर डेफिशिएंसी रे शॉक ही जाई छी तो से केस रे हमें को पोजीशन ता को नेले हमें ब्लड रो इनफ्लो को बढ़ाई परिबा यस राजलक्ष्मी यस ठीक अछि वेरी गुड इट इज ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन रो माने होची हमर गोटे पेशेंट ता को हमें फ्लैट ले कर दोचे तारा फीट को अपर पोजीशन रे ताको ले करचे सो दैट हमर हेड जति की पोजीशन रे प्रेजेंट अछि तार ऊपर पोजीशन रे हमें कोन करचे ताको ले करके रखुचे जा द्वारा होचे कोन ना ब्लड रो इनफ्लो डा हमर बढ़ुचे सर्कुलेशन टा हमर बढ़ुचे हैला तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन वेरी गुड नेक्स्ट इन अ patient lying supine for long periods pressure ulcers most commonly develop over the greater trochanter sacrum lateral malleolus scapula कौन हबो यस कल्पना साहू सी ठीक अछि बी हबो सुबलक्ष्मी वेरी गुड सैक्रम जोडा कि हमर वर्टेब्रल कॉलम रो लास्ट बोन टा जोडा कहूचे हमें प्रेशर पडुची तारी ऊपर प्रेशर पडुची आ प्रेशर पडिले सेडा रे हमर अल्सर्स गुडा को जनरेट हेबार चांस रहउची ठीक अछि अल्सर जनरेट हेबार चांस रहउची ठीक अछि बी सैक्रम हैला बी सैक्रम डन
नेक्स्ट इवा हेले ताले which of the following is not considered as a vital sign, not considered as a vital sign. vitals जेतले हमें नौचे कोन से पेशेंट रो जेतले vitals नौचे को जिंसटा को हमें कंसीडर करूनी, को जिंसटा को कंसीडर करूनी. yes, temperature, pulse, blood pressure, height. हां कोडा बी कोचा एस्पिरिन डी, सुबलक्ष्मी डी, राजलक्ष्मी, सुश्री, रोजिता. ठीक अछि. height, weight, color of the skin, these are not the characters जोड़ा कि हमें vitals measure करला को नौचे हैला. vitals measure करला बेल को हमको blood pressure दरकार, आउ heart rate ता दरकार, temperature दरकार पड़ले blood रो pH टा को हमें measure करि परिबा बा blood रो pH को for a moment हमें consider करि परिबा vitals पई बोली. but height is nowhere related जते बळे हमें vitals नौचे हैना, जते बळे vitals नौचे. ठीक अछि कल्पना. ठीक. next question number 6. an auxiliary temperature reading requires the thermometer to remain in place for about, auxiliary temperature reading requires the thermometer to remain in place for about 1 minute, 3 to 5 minutes, 8 to 10 minutes, 15 minutes. yes, B. A. it is B हैला. 3 to 5 minutes, 3 to 5 minutes जे हमें सबको थर्मोमीटर को इन प्लेस रे प्लेस करके रखिबा दरकार फॉर द परफेक्ट रीडिंग टू कम आउट हैला. परफेक्ट रीडिंग टू कम आउट. नेक्स्ट, the apical pulse is best auscultated, the apical pulse is best auscultated at the radial artery, the branchial artery, the fifth intercostal space, left mid clavicular line, the carotid artery. Would you? yes, माने पल्स मेजर करला बेलको हमें को पोजीशन रे जे रखिले हमें पल्स ता बेटर हमें जानि परिया. को पोजीशन रे रखिले हार्ट रो अपिकल पल्स तो मेजर करियार थिबो. सी एस्पिरेंट. यस, द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन हैला. एडा हमरो पल्स ता बेटर रीड करि परिबो. तो जे कोनसे कोटे नर्स पई बोली दिस पोजीशन इज द बेस्ट वन जोटा रे कि हमें पल्स को बेटर हमें रीड करि परिबो अपिकल रीजन रे. व्हिच इज द फर्स्ट करेक्ट फर्स्ट स्टेप इन द हैंड वॉशिंग टेक्निक. hand washing technique में बोली first correct step कौन, apply soap, wet hand with running water, turn off tap with a paper towel, dry hands with towel. first step हाथ धोइयार first step technique टा कौन पचाइछि, हाथ केमिति धोइबो first step. हां चलो आज पूरा माने हमें बेसिक रो आरंभ करिके एडवांस लेवल जे क्वेश्चंस जिबा धीरे धीरे क्वेश्चंस रो लेवल भी बढ़ा हबो बेस्ता बार नहीं हैला. तो it is just a preliminary class जोडा रे कि हमें देखिबा को लेवल माने को टाइप रो क्वेश्चन आसुची को कंटेंट बेस रे हमें पढिया को पड़िबो हैला. तो इट विल बी बी. यस, वेरी गुड. वेट हैंड्स विथ रनिंग वाटर. फर्स्ट तो हाथ रा धोइबो, तापर सोप अप्लाई करिवो, तापर पुणी धोइबो हैला. तापर माने पूरा कॉर्नर्स पूरा को पूरा रब करिवो, भलो से रिंस करिवो, देन पुणी धोइबो, देन यू विल बी ड्राइंग योर हैंड्स विथ द टॉवल. ठीक. नेक्स्ट, इन द फॉलोअर्स पोजीशन द हेड ऑफ द बेड इज टिपिकली एलिवेटेड at which degree, केते डिग्री रे हमरो जनरली हमें देखु जे सर्जरी हे गला कि कोन से प्रकार हमरो जो पेशेंट्स माने जो बेड उडा कर रहउचंती हैला से मानकर हेड ता स्लाइटली टिके स्लैंटेड हेगिरी से बेड पोजीशन ता थाए हैला. सो दैट से जो एलिवेटेड पोजीशन रे से माने हार्ट रेट ता मते बेटर वे रे से माने सर्कुलेट करि पारी. ठीक अछि. त केते पोजीशन रे हमरो हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड, केते पोजीशन रे एलिवेट करा जाउची. यस, B, A, B. काहे के त कंफ्यूजन पूरा टिपिकल एलिवेटेड ता हमरो एतिक रे होउची. ठीक अछि ना. एलिवेशन ता हमरो 45 टू 60 डिग्रीज रे होउची. 15 टू 30 डिग्री रे ए पोजीशन ता हमरो लो फाउलर्स बोली कहला जाय हला. ए पोजीशन टा को हमरो लो फाउलर्स बोली कहला जाय. आ जो माने सब 30 टू 45 होउचो एडा के सब हमरो सेमी फाउलर्स बोली कहला जाय. सेमी फाउलर्स बोली कहला जाय. ठीक अछि. आउ जो 60 टू 90 हला माने 90 डिग्री रे एडा जो देइची हला एडा हो जे हमर हाई फाउलर्स जोडा कि हम 60 डिग्री रो 90 डिग्री रे जदी रखिबा
एटा होची हमर हाई फाउलस तो सती पई बोली सब अप्रोप्रिएट बोली कहले हमें एटा को हम मिड रेंज रे कहि परिमा ना ठीक अछि लो सेमी ये हाई हलानी हला एटा होची सब appropriate position obviously हमें ये जो फाउलर गुडा करूचे according to the requirement of the patient हमें से अनुसार हेड को टिल्ट करके रखुचे हला हेड ऑफ द बेड को टिल्ट करके रखुचे तो accordingly एटा होची हमर फाउलर पोजीशन रो सुटेबल मेथड नेक्स्ट which of the following best describes the sims position कौन होची sims position yes कोई परिबो lying flat on the back a semi prone position lying on the left side with the right knee flexed lying face down head positioned lower than the feet yes C B yes aspirant B a semi prone position lying on the left side with the right knee flexed एटा कोन होची लेफ्ट साइड रे पेशेंट को टिल्ट करा होची हला नी आ हिप रीजन टा को हमर टिल्टेड करा होची फ्लेक्स करके एमदी फोल्ड कर रखा होची जा द्वारा कि माने जनरली एनीमा केस रे या फिर रेक्टल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करिया पई बोली हमर ए पोजीशन रे जनरली यूज करा जाय जोडा कि हमर सिम्स पोजीशन बोली कहै जाउची हला सिम्स पोजीशन बोली कहै जाउची सेमी प्रोन पोजीशन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड रे बुलिमा आउ नी आ हिप रीजन को नी आ थाई हिप रीजन को एमदी फ्लेक्स करके फोल्ड करके रखा हबो हला जनरली एनीमा और रेक्टल इन्फेक्शंस रो केस रे हमर ए पोजीशन टा को करा जाउछ नेक्स्ट फॉर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजरमेंट द कफ ब्लैडर width should cover approximately what percentage of the arm circumference माने जो कफ टा हम यूज करजे जो कफ टा लगौजे हला यस एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन यस कफ पोजीशन टा को हम जते बेले लगौजे कफ टा जते ब्लड प्रेशर को मेजर करिया पे सेते बेले केते परसेंटेज रे से हमर कवर हे गले जे हमर ब्लड प्रेशर टा जणा पड़ी जिवो बोली हमें कहूचे राजलक्ष्मी श्रेया yes B yes it is 40% रे मध्ये हमर जदी आर्म सर्कमफरेंस को सी एनक्लोज करतो अछि ताले मध्ये हम ब्लड प्रेशर ता जणा पड़ी छै हैला ब्लड प्रेशर ता जणा पड़ी जिवो ठीक आ हमर जो ब्लड प्रेशर मेजर करिया पई बोली जो मशीन ता यूज होचे से मशीन ता कोन इट इज स्फिग्मामो मैनोमीटर ठीक अछि स्फिग्मामो मैनोमीटर आ हमर जो जनरल ब्लड प्रेशर ता बा जो नॉर्मल रेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर सेटा होची 120/80 को यूनिट रे हमें मेजर करचे हमें जो यूनिट रे मेजर करचे इट इज mmH हला मर्क्यूरिक मिलीमीटर रे हमें एटा को मेजर करचे जते बेले एटा हमर एलिवेट ही जाउची बा हाई ब्लड प्रेशर रो पोजीशन हाई ब्लड प्रेशर रो केस रो कोन कहूचे 140/90 mmHg हले एटा हला हमर हाई ब्लड प्रेशर आउ जते बेले सी हमर लो ब्लड प्रेशर के तले कहूचे 100/60 mmHg रे हमर ये हे जिवो लो ब्लड प्रेशर ठीक हला यस mmHg रे तको मेजर करा होचे मर्क्यूरिक मिलीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल पल्स रेट रेंज फॉर एन हेल्दी adult is normal pulse rate range for an healthy adult is yes 40 to 60 60 to 100 100 to 120 120 to 140 कौन होबो B aspirant Prasmita yes 60 to 100 beats per minute 60 to 100 beats per minute देखो एटा होचे हमर गोटे नॉर्मल हार्ट रेट ठीक अछि गोटे नॉर्मल हार्ट रेट जोडा रे कि हमें हार्ट बीट को मेजर करि पाउचे बाकी हार्ट बीट ता हमर लो भी हेई पारे हाई भी हेई पारे पर मिनिट बेसिस रे जदी देखिबा हमर हार्ट बीट ता कम भी हेई पारे अधिका भी हेई पारे करेक्ट तो गोटे कंडीशन अछि ताको कहा जाउचे कोन ना अरिथमिया कंडीशन रे कोन होची एटा डिनोट करचे हमर इरेगुलर हार्ट बीट हला जते हार्ट बीट ता इरेगुलर हबा हमर से कंडीशन ता को अरिथमिया बोली कहा जाउचे एटा दी प्रकार हेई पारे गोटे होची ब्रैडिकार्डिया आ गोटे होची टैकिकार्डिया ब्रैडिकार्डिया गोटे हला आ टैकिकार्डिया गोटे हला हला ब्रैडिकार्डिया होची जते बेले हमर कोन होची सी होगा कौन सा सी होगा राजलक्ष्मी नॉर्मल पल्स रेंज पूछा है ना नॉर्मल पल्स रेट
पल्स रेट टा कोन हार्ट बीट ठीक अछि त हमें नॉर्मल कोन कहूचे 72 टू 75 जोटा कि केते रेंज रे पडुची 60 टू 100 रेंज रे पडुची करेक्ट हला अच्छा तो एडा हमर इरेगुलर हार्ट बीट दीटा कंडीशन रे हे परबो ब्रैडिकार्डिया एंड टैकिकार्डिया हला तो ब्रैडिकार्डिया रे कोन रैपिड एंड फास्ट हार्ट बीट जिते हार्ट रेंज टा परसिस्टेंटली हमरो 110 रु 120 बीट्स पर मिनिट रे रहइबो हैला से कंडीशन टा को हमरो ब्रैडिकार्डिया बोली कहवा जाउची आ जिते स्लो हार्ट बीट टा स्लो हे जिवो त माने 50 टू 60 बीट्स पर मिनिट से कंडीशन टा को टैकिकार्डिया कहवा जाउची हैला तो एरिथमिया होची हमरो इरेगुलर हार्ट बीट अधिका हे गेले सेटा को टैकिकार्डिया सॉरी अधिका हे गेले सी हे गेला अरे अरे मु उल्टा कहि देली यस 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 मु उल्टा कहि देइची सॉरी 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 ताले मु एटा को एडी ब्रैडिकार्डिया लिखि छी एडी टैकिकार्डिया लिखि छी अच्छा अच्छा हो तो ये हला टैकिकार्डिया आ ये हे गेला ब्रैडिकार्डिया ठीक अछि हां हां ठीक 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 हला डन हां 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 रोजिता यस 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 माय मिस्टेक मु लिखि छी गोटे ऊपर उल्टा हला तबरे ए तळे लिखिली उल्टा ठीक अछि हां तो टैकिकार्डिया हला रैपिड एंड फास्ट हार्ट रेट 110 रु 120 ब्लड प्रेशर पर मिनिट सॉरी बीट्स पर मिनिट ब्रैडिकार्डिया होची स्लो हार्ट रेट 50 टू 60 बीट्स पर मिनिट यस 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 थैंक यू नेक्स्ट the most accurate site to assess the pulse of an infant is radial pulse apical pulse carotid pulse femoral pulse कौन यूज करा होची जते बेले हमें गोटे इन्फेंट र पल्स रेट मेजर करूचे तो मोस्ट एक्यूरेट जगाडा बा मोस्ट एक्यूरेट साइट जोडरे कि हमें पल्स रेट को मेजर करि परिबा से साइट ता कोन रेडियल पल्स एपिकल पल्स कैरोटिड पल्स फेमोरल पल्स इट इज एपिकल पल्स हैला इट इज एपिकल पल्स जोटा कि हमें देखिले अपेक्स ऑफ द हार्ट से रीजन रु हैला फिफ्थ इंटरकोस्टल कैविटी रु सेरा हमर जो मेजर करा होची दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट साइट जोडरे कि हमें गोटे इन्फेंट रो ब्लड प्रेशर हि बाउची हार्ट रेट को मेजर कर हैला नेक्स्ट which device is used to prevent a foot drop in a bedridden patient foot drop in a bedridden patient गोटे पेशेंट जदि हमर bedridden अछि डिजीज कोन से भी डिजीज कारण सेटा रे हमें फुट ड्रॉप को किमिति हमें प्रिवेंट करि परिबा हैला ट्रोकैंटर रोल फुटबोर्ड हैंड रोल पिलो अंडर द नीज कोन हबो यस ठीक अछि यस बी ओके फाइन थैंक यू तो फुटबोर्ड हे जिबा हमरा करेक्ट आंसर डन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा the purpose of placing a trochanter roll along the patient's hip is to prevent foot drop external rotation of the hip contracture of the fingers pressure on the heels कोन हमें फुटबोर्ड रो काम जानिली जे फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करिया पे बोली हमें फुट ड्रॉप यूज करछे फुटबोर्ड यूज करछे हैला फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करिया पे बोली फुटबोर्ड यूज हैला so what is the purpose of placing the trochanter roll और trochanter roll जे जोडी प्लेस भी होची सेरा मते जकाडा मते कहि देला पेशेंट रा हिप रीजन रे प्रेजेंट होची हैला हिप रीजन रे हम सेटा को प्लेस करके रखुचे कोन पे रखुचे एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप रे एक्सटर्नल रोटेशन को हमर प्रिवेंट करिया पे बोली हमर ए मेथड ता यूज करा जाउची डन बी यस राजलक्ष्मी नेक्स्ट 16 which of the following is an example of the medical asbestos गोटे माने मेडिकल एस्पेसिस रो गोटे एग्जांपल ले कोन यस sterile gloving hand washing surgical scrubbing autoclaving instruments कोन हबो बी ए सी ना डी राजलक्ष्मी बी यस hand washing is the basic technique जोडरे कि हमें pathogens को remove करिया पे बोली ये टेक्निक का यूज करछ हैला there's no more discussion here let's move to the next question surgical asbestos is also referred to as
Surgical asbestos is also referred to as कौन? Yes. Shriya, Nivedita, Rasmita, Rojita. Yes. It is sterile technique. B. है sterile technique. जोड़े कि हमें कौन surgical asbestos is also referred to as sterile techniques. चलो next शिवा, let's move to the next question. Standard precautions should be applied to blood only, blood and all body fluids, sweat only, tears only. कौन कौन standard precaution should be applied to जे कोनोसी जिंस को प्रिकॉशन हमें नेबा कथा हैला बट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जोड़ा हमें नौजे कहा को अप्लाई करूचे कहा को करी के धरि के नौजे इट इज बी बी ब्लड एंड ऑल बॉडी फ्लूइड्स वेरी गुड ब्लड एंड ऑल बॉडी फ्लूइड्स ब्लड जदि हमें देखिबा आ अन्य जो बॉडी फ्लूइड्स मजे हमर से ब्लड कंपोजिशन भीतर ही जाउची सब प्रकार बॉडी फ्लूइड्स मिसे के हमर ब्लड भीतर जाउची खाली लिम्फ को छाडी देले हां खाली लिम्फ को छाडी देले जदि हमें ब्लड आ तार अन्य सब बॉडी फ्लूइड्स कथा हेबा ताहले ब्लड रे हमर कोन कोन आसी जाउची प्लाज्मा आसी जाउची आ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आसी जाउची प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स आसी जाउची ठीक अछि फॉर्म्ड एलिमेंट्स भितरे आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ प्लेटलेट्स आसी जाउचंती आ प्लाज्मा भितरे प्लाज्मा डा जोटा कि हमर कलरलेस फ्लूइड ता ठीक कलरलेस फ्लूइड ता it is composed of 90 to 92% of water एते की परसेंटेज रे वाटर प्रेजेंट अछि हला तापर जति देखिबा 6 to 8% रे हमरो प्रोटीन्स प्रेजेंट अछि आउ 1 to 2% रे हमरो आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स एडा को मध्ये सब प्रेजेंट थाए एडा को मध्ये हमरो सब एडी प्रेजेंट थाए ठीक अच्छा तो एडा हला हमरो कलरलेस फ्लूइड प्लाज्मा रे जोडा ए सब कंपोनेंट्स द्वारा हमरो देखा जाउछ ठीक अच्छा ए जो 6 to 8% प्रोटीन अछि ए प्रोटीन ओडा जोडा को प्लाज्मा प्रोटीन बोली कहआ जाउछ केते प्रकार प्लाज्मा प्रोटीन अछि वी हैव जनरली 3 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन गोटे हला एल्बुमिन आ गोटे हला ग्लोब्युलिन आ गोटे हला फिब्रिनोजेन करेक्ट एल्बुमिन ना हमर कोन पे हेल्पफुल एल्बुमिन दा हेल्पफुल हमर ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करबो ग्लोबुलिन डिफेंस हैला और फिब्रिनोजेन दा कोन करूची फिब्रिनोजेन दा इज यूजफुल फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर हैला क्लॉटिंग फैक्टर पई बोली ये यूजफुल अच्छा तो ये हे गेला हमर सब गुडा का बॉडी फ्लूइड सब जिंस पई बोली हमको प्रिकॉशन लेबा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सीडीसी गाइडलाइन द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिमूविंग द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इज कौन कौन किमिति को सीक्वेंस रे हमें रिमूव करिया दरकार क्लॉटिंग फैक्टर्स कोआगुलेशन पे यस ठीक हो जास देखो पीपीई किट रिमूव करिया पे बोली सीडीसी गाइडलाइन अनुसार करेक्ट ऑर्डर ता कोन फर्स्ट रे ग्लव्स रिमूव करियो तापरे गाउन तापरे मास्क तापरे गॉगल्स हैला इट इज ए यस शुभलक्ष्मी डन राजलक्ष्मी ए हबो हैला आगो ग्लव्स तापरे गाउन तापरे मास्क then finally the goggles हैला since your eye is very sensitive हैला तो आखी ता को हमें लास्ट तक प्रोटेक्टेड रखिया दरकार इन केस जदी गाउन रे बा मास्क रे बा ग्लव्स रे कोनसी प्रकार पैथोजन थिबो इट कैन डायरेक्टली एंटर इनटू आवर आई जोटा कि हमरो बॉडी फ्लूइड भितरे मध्ये कोटे कंपोनेंट रहउची तो सति पे बोली हम खास ध्यान रखी खास प्रिकॉशन नेबा दरकार से जगह पे देन शिवानी यस ए 20 before administration feed through a nasogastric tube the priority nursing action is to check tube placement, flush with cold water, position the patient supine, remove the tube. nasogastric action पूर्वरु nasogastric tube जतले हमें पकेबा ता पूर्वरु हमें कोन करिया दरकार yes a yes
ठीक अछि शुभलक्ष्मी सुश्री हां एस्पिरेंट ए चेक द ट्यूब प्लेसमेंट ट्यूब रो प्लेसमेंट को फर्स्ट चेक करिया दरकार हम हैला कि प्रॉपर्ली से हमर अलाइन हेगी जो जगह रे हम इंसर्शन हेबा दरकार से जगह रे होउची कि न होउची हैला से जगह रे होउची कि न होउची अदरवाइज इट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स it can lead to multiple problems ठीक next before administering an enema the patient should be positioned in supine position left lateral sims position prone position high forward position जोटा कि हमें आप पूरा ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे ना ऑलरेडी डिस्कशन करि सारिचे आ ऊपर पूरा डिटेल वे रे तो सेति में बोली आई होप दिस शुडंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू ए क्वेश्चन रा आंसर कोन होबा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 it is C B Shubhalakshmi yes it is B left lateral sims position जोड़ा कि हमें पेशेंट को लेफ्ट साइड आडे लाई करेगिरी हिप और नी पोजीशन को फ्लेक्स करौचे अपवर्ड्स फ्लेक्स करौचे जा द्वारा कि एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन पई बोली ए पोजीशन रा सबटु सुटेबल नेक्स्ट the recommended angle for insertion for a subcutaneous injection is subcutaneous injection ro इंसर्शन पई बोली सबुठ बेस्ट एंगल टा कोन B is the correct answer yes Swapna B yes it is 45 to 90 degree Celsius 45 to 90 degree Celsius depending on कि गोटे पेशेंट रो वेट ता केमिति अछि गोटे पेशेंट केते दूर जे सी हमरो अब्सॉर्ब करि परिबो माने सेटा जेमिति तार जो मटेरियल टा हम जो दोचे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द्वारा सेटा जेमिति तार फैटी टिश्यू रे जाई स्टोर हेगी रहि परिबो आ ए जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टा जो दिया जाउची इट इज गिवन इन द लेयर द between the skin and the muscles हैला स्किन और मसल रो लेयर मझी रे एटा को दिया जाउची जा द्वारा कि फैटी टिश्यूज रे ए जो मटेरियल टा हमर जे स्टोर हेगी रहइबो जोटा कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टाइम बोली बॉडी रे सस्टेन हेगी रहिले ता बॉडी रे सेटा कामडा देखै परिबो हैला ता बॉडी रे कामडा देखै परिबो नेक्स्ट Question number 23. Which of the following is considered the safest site for intramuscular injection in the adults? Intramuscular injection ପାଇଁ बोली सबुठु safest site टा कोन? Yes. It is very good Swapna aspirant Shubhalakshmi ventrogluteal है ना near the hip region better for intramuscular injection in the adults next does that track technique of injection is primarily used to reduce pain and prevent the leakage of drug into the subcutaneous tissue increase the absorption rate speed up the onset of the drug action reduce the volume to be injected Question number 24. A. Aspirant. Yes. To reduce the pain and prevent the leakage of the drug into the subcutaneous tissue. Subcutaneous tissue को prevent करिबो leakage टा जो कोन सी drug टा हमर injection द्वारा दिया जाउची. Also pain मध्ये हमर कम रहिबो आउ leak मध्ये हबनी. एडा पई बोली हम Z track technique टा यूज करछि injection मानको पई generally. Next. Which route of drug administration has the fastest onset of action? Fastest onset of action. माने ड्रग दो माने जे कोना नै देह भलो नै इंजेक्शन दो भलो होई तो को जाके रे देले जे इंजेक्शन दा दो संग संग भलो होई जबा हमर कोन होबो से which route of drug administration has the fastest onset of action oral intramuscular subcutaneous intravenous D aspirant yes it is intravenous directly vein रे दे दियो से डायरेक्टली जाई गिरा हम ब्लड रूट रे मिसी जीवो ब्लड रूट रे मिसी गले सी हमर फाइनली कोन होबो हमर एडमिनिस्ट्रेशन दा संगे संगे हबो संगे संगे इफेक्टिव हबो the correct abbreviation used for the medication orders for before the meals कोन हबो before meals पई बोली intravenous yes Rajita
बिफोर मील जतले हमें मेडिकेशंस लिखुचे सेतबेले बिफोर मील आफ्टर मील इमीडिएटली नियरली द बेड टाइम ए सब एब्रिविएशन हमें कोन यूज करछे हमें यूज करछे एसी एसी फॉर बिफोर मील्स आउ पीसी कोड यूज होची पीसी रो माने होची पोस्ट साइबम रो माने हला आफ्टर मील्स हला आफ्टर मील्स अच्छा एचएस रो माने कोन सोमनी माने होची एट बेड टाइम और स्टार्ट रो माने होची स्टार्टिंग ता माने हला इमीडिएटली ठीक अछि और एसी रो फुल फॉर्म कोन एसी रो फुल फॉर्म होची एंटीसाइबम ठीक अछि हां एससीबीसी रे कट ऑफ केते जीवो एससीबीसी पई बोली समिति किछ स्पेसिफिक हमर कट ऑफ नाही नॉर्मल तमर जनरल पई बोली 35% अन्य कैटेगरीज पई बोली तमर 30% ठीक अछि इमीडिएटली देन इमीडिएट होची स्टार्ट ठीक अछि हे गला सब उडा क्वेश्चन सब उडा हमर जहा जहा हमरा आसिया कथा हे गला नेक्स्ट क्वेश्चन चला द मेडिकेशन ऑर्डर रिटन एज स्टार्ट मींस द ड्रग शुड बी गिवन जस्ट एवे डिस्कशन करि देले हमें तारी ऊपर डिस्कशन जस्ट हे गला तारी ऊपर तो आंसर हियर विल बी स्टार्टर माने आसुचे कोडारो स्टार्टर माने आसुचे हमर स्टैटिम रो हैला स्टार्टर माने हैला स्टैटिम एंड स्टैटिम रो माने होचे हमर इमीडिएटली नेक्स्ट before administering any medication the nurse should verify patient identity by asking the patient name and checking the id band asking a nearby relative checking the bed number only assuming identity from the chart कौन होबा एटा माने बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन ना हैला तो कौन होबा एटार आंसर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी मेडिकेशन द नर्स शुड वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी बाय पेशेंट रो नाम पचारिबो तार आईडी कार्ड चेक करबो आईडी बैंड में जहा जहा सब इंफॉर्मेशन थिबो से सब इंफॉर्मेशन को कंसीडर करी कि तापर जाई कि हमें ताको कोन करबा कोनोसी भी कोटे मेडिकेशन ताको एडमिनिस्टर करबा हैला अज्यूम करबानी निजे निजे चार्ट रो देखिबी बेड नंबर देखि कि खाली मेडिकेशन दे देबा मेडिसिन इट इज नॉट द प्रॉपर वे ठीक रिलेटिव को पचारिया अपेक्षा डायरेक्टली पेशेंट को पचारिबा हैला डायरेक्टली पेशेंट को पचारिबा asking the patient name and checking the id band हैला अच्छा ठीक अछि हां हां टिके नेटवर्क प्रॉब्लम थिला एबे ओके हैला एबे ऑल ओके तो एटा क्वेश्चन दा जोड़ा हमें करूथिले आस्किंग द पेशेंट नेम डायरेक्टली पेशेंट नेम पचारिबो तार आईडी देखिबो आईडी देखि जो आईडी बैंक ता जोड़े तार माने एडमिनिस्टर कराई थाउची सेड रे जहा सब इंफॉर्मेशन अछि ताकू नै कि ताकू बेस करी गिरी तापर हमें अन्य सब जहा सब मेडिकेशंस देबा कथा दिया हैला जहा सब मेडिकेशन दिया कथा सेठी हबो तो एडी हबो क्वेश्चन नंबर ए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हैला हां आदाना सिलेक्शन नुहे राजलक्ष्मी क्वालिफाई है ना सेडा 35% रखिले क्वालिफाई करबो तापर ऑन द बेसिस की हमर कोन माने तमे काउंसलिंग पई अप्लाई करि परबो बेसिकली तमे 35% तो मिनिमम रखिया कथा काउंसलिंग रे पार्टिसिपेट करिया पई बोली हैला अच्छा चलो आसो the 5 right of medication administration including the right patient right drug right dose right route and right diagnosis right time right cost right word कोन होबो हमर जेमति फंडामेंटल रूल्स अछि हैला सेमिति हमर फंडामेंटल राइट्स मध्ये अछि फॉर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो सेडा रे हमर कोन कोन दखुचे गोटे द राइट पेशेंट ठीक पेशेंट को ठीक मेडिसिन दबो ठीक पेशेंट को ठीक मेडिसिन दबो ठीक डोज रे दबो ठीक रूट रे दबो आउ ठीक टाइम रे दबो ठीक अछि ठीक टाइम रे दबो तो एडा हला वन ऑफ द 5 राइट्स जोडा कि हमर गोटे ऑप्शन रे
अच्छी 29 टा हिजबो बी यस स्वप्ना नेक्स्ट accurate measurement of intake and output I and O requires the nurse to estimate fluid volume, measure and record all fluid intake and output accurately, record only oral intake, record only urine output. कौन हबो I and O intake and output जेतेबेले आमे मेजर करूचे intake and output जेतेबेले मेजर करते ताहाले आमे प्रतिटी जिंस जहां भी आमे फ्लूइड रो इंटेक होची बा जहां भी फ्लूइड रो हमरो आउटपुट ता बाहरुची से सब जिंस को आमे मेजर करिया दरकार मेजर एंड रिकॉर्ड ऑल द फ्लूइड इंटेक एंड आउटपुट एक्यूरेटली हैला बी हेजबो करेक्ट आंसर यस रश्मिता डन नेक्स्ट क्वेश्चन also a fully indwelling catheter is inserted primarily to fully indwelling catheter is inserted primarily to measure the blood pressure, provide continuous urinary drainage, administer the medication, collect a stool sample. कौन होगा? Fully indwelling catheter is inserted primarily to B urinary drainage. Yes, catheter वाला generally हमारे urine output बा urinary drainage को ensure करिया पे बोली दिया ही है ना urine output के ensure करिया पे बोली दिया ही है डन ठीक है ठीक है एड़ा तो सब अलग है वाला नेक्स्ट the urine drainage bag of a catheterized patient should always be positioned above the level of the bladder below the level of the bladder at the same level as the bladder on the patient's bed कहां बा बी यस कैथेटराइज्ड पेशेंट रे जो हमर जो कलेक्शन बैग डा कैथेटराइज्ड बैग डा जोडा जोडा कि यूरिन ड्रेन होची सेटा हमर ब्लैडर तळ को रहबा दरकार हैला सो दैट से ग्रेविटी द्वारा से मूव करेगी हमर तळे कलेक्ट ही पाइबो डन बी यस बी बिलो सॉरी हां ठीक तो अछि बी बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर हैला बिलो द लेवल ऑफ द ब्लैडर डन थैंक यू नेक्स्ट which of the following is a sign of urinary retention the sign ta kono frequent small voiding with a distended palpable bladder clear urine output decreased abdominal girth absence of the bladder fullness kon haba yes a yes frequent small voiding with a distended palpable bladder हैला palpable bladder done चलो next question जी बता ले question number 34 the best time to collect a clean catch midstream urine specimen urine जतबेले हमें कोनसी प्रकार यूरिन सैंपल दोचे यूरिन को कलेक्ट करिया पई बोली दोचे से केस रे हमर को टाइम द मोस्ट सुटेबल टाइम any time of a day the first morning void immediately after the meals just before the sleep कौन होगा बी अच्छा ठीक है the first morning void है ना morning रो माने दिन रो जो first urine टा सेटा हमर especially helpful for कौन to urine specimen टा collect करिया टाइम है ना next oliguria refers to midstream urine yes b एडा हबो सी हबो हैला यस प्रतीक्षा निवेदिता रश्मिता शुभलक्ष्मी हां शिवानी डन पेनफुल यूरिनेशन माने कोन एवडा सब मते टर्म्स उडा कहि देलो एवडा सब टर्म्स उडा मते कहि देबा देखो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन से कंडीशन ता कोन एनोरिया हैला एक्सेसिव यूरिन आउटपुट से होच कोन पॉलीयूरिया ठीक आउ पेनफुल यूरिनेशन कोन सेडा डिसूरिया हैला डिसयूरिया ठीक हाँ वेरी गुड डन तो एडा हि जबा हमर कोन ओलिगोरिया इरेगुलर यूरिन हैला बस लेस यूरिन आउटपुट नेक्स्ट चलो व्हिच नर्सिंग मेजर हेल्प्स प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन इन अ बेडरिडन पेशेंट
कॉन्स्टिपेशन जोडरे कि हमर हार्ट स्टूल्स रो फॉर्मेशन रहउची हैला गोटे बेड रिडन पेशेंट पाई बोली तार तो कोनसे प्रकार फिजिकल एक्टिविटी नाही कि कोनसे प्रकार हमर इनटेक ऑफ द फूड हमर एक्सटर्नल सोर्स रो एते रहिबनी हैला तो फ्लूइड रो इनटेक टा को हमें बढ़े गिरी आ डाइटरी फाइबर्स रो इनटेक टा को बढ़े गिरी हमें कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करि परिबा हैला फाइबर्स जते बेले हमें नउचे गोटे स्टैंडर्ड अमाउंट जते फाइबर रो इनटेक टा रहउची सेते बेले हमर स्टूल रो मूवमेंट टा अधिका देखा जाय ठीक अछि तो एनकरेजिंग द फ्लूइड्स एंड डाइटरी फाइबर्स एंड मोबिलिटी हैला मोबिलिटी जनरली फिजियोथेरेपी टाइम रे मध्ये हमर हिप रीजन रो मोबिलिटी करा जाय मसाज करा जाय जा द्वारा कि स्टूल रो मूवमेंट टा इजियर हे परियो हैला तो एनकरेजिंग द फ्लूइड्स and dietary fiber and the mobility. This is one of the measure which helps prevent the constipation in a bedridden patient. चलो जब next question है जब the normal range for adult oral body temperature. Adult oral body temperature कौन होगा? B. Yes, it is 97.6 to 99.6 डिग्री फारेनहाइट डिग्री तो रहिया कथा नै फारेनहाइट रे हैला रहि जाईची ताको हमें डिग्री को कन्वर्ट करके सेल्सियस रे जतले मेजर करबा कोन आसीबा आंसर इट इज 37 डिग्री सेल्सियस एडा होचे हमर गोटे नॉर्मल रेंज हैला नॉर्मल रेंज बा नॉर्मल टेंपरेचर एंड बीइंग अ मैमल वी कैन मेंटेन अ नॉर्मल बॉडी टेंपरेचर बॉडी रे हमें गोटे नॉर्मल टेंपरेचर को मेंटेन करके रखि परिबा हैला and that is the reason which due to which we are known as homeotherms या फिर warm blooded organisms हैला आउ ए warm blooded organisms रे माने होची we are able to maintain a constant body temperature external temperature चाहे हमर 0 डिग्री भी हे जाओ हम बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री एक्सटर्नल टेंपरेचर हमर 50 डिग्री हे गेले मते बॉडी रो टेंपरेचर 37 डिग्री एटा होची कांस्टेंट टेंपरेचर आ जो जिंसटा माने जो ऑर्गेनिजम्स माने ए जो जिंसटा देखै पारु नहंती ए जिंसटा जो देखै पारु नहंती को ऑर्गेनिजम्स माने देखै पारु नहंती बेंग होई गले सप होई गले हला ए माने समस्त हमर ए एबिलिटी टा देखै पारु नहंती हला सेति पई बोली से दे आर नोन एज द कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स और कोई किलोथर्म्स बोली समान लिखवा जाउची हला आ आमे माने गोटे कांस्टेंट बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन करके रखि परिबा सेति पई बोली तो आमे मैमल्स हला सेति पई बोली आमे मैमल्स नहले तो आमे भी बेंग होई जाई थांदे ना करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 which site provides the most accurate measurement of the core body temperature जो टेंपरेचर हां मैम आपण को ऑफलाइन रे केवल एमसीक्यू पई बोले किछि बैच अवेलेबल अछि कि खाली एमसीक्यू तो नहीं हला खाली एमसीक्यू नहीं पूरा कंप्लीट सिलेबस रो कवरेज रोछ हैला कंप्लीट सिलेबस रो कवरेज रोछ जतले मॉक टेस्ट हबो सेतले मॉक टेस्ट हमर ऑफलाइन ऑनलाइन सब बोथ हबो हैला इट इज कोन हबो आंसर ओरल एक्सिलरी रेक्टल टिम्पैनिक मोस्ट एक्यूरेट टेंपरेचर साइट सी yes it is rectal हैला rectal हबो आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन आसो क्वेश्चन नंबर 39 during a bed bath the nurse should wash the patient's body in which order feet to head clean areas first moving to the perineal area last perineum first in a random order तो obviously नहीं गोडरो मुंडो जाए तो नहीं ठीक अछि पेरिनियम मध्ये फर्स्ट नुहे आगो हमर जो एरिया उडा क्लीन अछि से एरिया उडा को हमर आगो कवर करा जाउची आगो सफा करा जाउची तापर पेरिनियल एरिया उडा को लास्ट रे हमर सेडा को कवर करा जाउची डन यस ठीक अछि चलो एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 द रेकमेंडेड वाटर टेंपरेचर फॉर अ बेड बाथ देबा पई बोली गोटे हमर जो गोटे नॉर्मल रेंज अछि टेंपरेचर रेंज ता अछि से टेंपरेचर रेंज ता कोन पानी ता को हमें केते डिग्री सेल्सियस रे रखिबा दरकार केते डिग्री सेल्सियस रे रखिया दरकार इट शुड बी इक्विवेलेंट टू योर बॉडी टेंपरेचर साथ मैच करबा दरकार बॉडी टेंपरेचर संगे मैच करबा दरकार ठीक अछि तो इट विल बी केते 37 to 46 डिग्री सेल्सियस है ना 37 to 46 डिग्री सेल्सियस ए हबनी ए हे गेले तो ठंडा ही जेबा ना हैला तो गुडे बेटर फॉर द नॉर्मल टेंपरेचर माने बॉडी रो टेंपरेचर हमर वाटर रो टेंपरेचर संगे समान थिला ठीक अछि बी करेक्ट नेक्स्ट
An unoccupied bed is prepared mainly to receive a new or ambulatory patient, change the linen while the patient remains in the bed, receive a patient returning from the surgery, restrain a confused patient. माने एवडा जो ऑप्शंस रा बाकी दिया है जी सर माने भारी ऑब्वियस ऑप्शंस उडागो हला तो restrain a confused patient ना receive a patient returning from surgery माने कोन तमे बेड खाली कर रखि देबो जगी दिबो कि पेशेंट सर्जरी रो आसिले ये सोइबो बोली हला से सब तो जिंस नाही नेक्स्ट change the linen while the patient remains at the bed घट्ट ऊपर रही तमे केमती linen bedsheet उडागो सब चेंज करबो कहला एडी हबो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हैला ऑप्शन नंबर ए ठीक receive a new or ambulatory patient. Next question number 42. Which type of bed is prepared to receive a patient returning from the surgery? सर्जरी रू रिटर्न करूथबा पेशेंट पाई बोली आमे जो बेड टाको प्रिपेयर करके रखुचे से बेड टा को टाइप रो बेड को आमे प्रिपेयर करके रखुचे इट इज ओपन बेड क्लोज बेड पोस्ट ऑपरेटिव और एनेस्थेटिक बेड ऑक्युपाइड बेड ऑब्वियसली एडार मध्ये बहुत ही ऑब्वियस माने ऑप्शन रू ही ऑब्वियस ही जाउची आंसर पोस्ट ऑपरेटिव बेड एनेस्थेटिक बेड हमरो सेटा को प्रोवाइड करा जाउची हैला प्रोवाइड करा जाउची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 रेंज ऑफ मोशन जोटा को कि हमें ROM बोली कहूचे ROM बोली कहूचे exercises are performed mainly to yes A Subhalakshmi Simani yes move the joints through their full range to maintain the flexibility range of movement जोटा कि हमर जनरली सर्जरी पेशेंट्स मान को हैला कि जे कोन से प्रकार पेशेंट जते बळे हमर विजिट करूचे हॉस्पिटल को आफ्टर ए सर्टेन रेंज ऑफ मान ट्रीटमेंट हैला पर जनरली तारो मूवमेंट मोशन रो रेंज देखा जाउची सो दैट बॉडी रो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखि परिबा जॉइंट्स रो मूवमेंट कोन केमिति अछि कोडी जल्दी केमिति स्टिफनेस न आसी जाईची से जिंस को चेक करिया पई बोली आरओएम करी हैला आरओएम करी नेक्स्ट according to the body mechanics principles while lifting a patient the nurse should keep the load lifting a patient जेतले गोटे पेशेंट गोटे नर्स जे पेशेंट को लिफ्ट करूची सेते बेले से नर्स का लोड ता का ऊपर दबो अवे फ्रॉम द बॉडी क्लोज टू द बॉडी अबव द शोल्डर लेवल एट द आर्म्स लेंथ केतो कोडी दबो प्रेशर ता यस the pressure should be given or the load should be kept close to the body रो क्लोजली सी हमरो प्लेस हेकी रहिबा दरकार हैला हां it should be yes close to the body placed next question number 45 when transferring a patient with a weak side from bed to wheelchair the wheelchair should be placed on the weak side strong side directly behind the patient should stand unsupported first तो पेशेंट को बिना सपोर्ट ठिया करेबाडा गोटे हमरो व्हीलचेयर वाला पेशेंट को बिना सपोर्ट ठिया करेबो हैला तुमको धर्म सहिबो हैला तो एडा हमरो तो टोटली नाही ठीक अछि डायरेक्टली बिहाइंड द पेशेंट रो बिहाइंड पे नय आ वीक साइड रे हमें डायरेक्टली प्लेस करूनु हमें स्ट्रांग साइड रे प्लेस करूचे तापरे जाई कि हमरो वीक साइड को हमरो प्रेशर दे खाउचे ठीक अछि स्ट्रांग साइड बी यस सी हबनी बी हबो हैला नेक्स्ट the primary purpose of a nursing care plan is to provide a legal record only individualized goal directed care for the patient billing the documentation staff duty scheduling one of the primary purpose of the nursing care plan is to provide individualized goal directed care for the patient amara patient को care करिबाडा होची प्राइमरी पर्पस पेशेंट रो केयर करिबाडा होची प्राइमरी पर्पस तो सेई सब जिंस को हमें आखिरे रखी करी सेई सब जिंस को हमें ध्यान रे रखी करी we should be aiming the purpose of the nursing care should be individualized goal directed care for the patients next question is which of the following is an example of the subjective data in a patient assessment blood pressure reading yes the patient statement of the pain a laboratory report an x-ray finding yes जेतले सब्जेक्टिव डाटा हमें कलेक्ट करू सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करले पेशेंट रो हमर को जगह रे पेन रहउची किमिति को जगह रे ओरिजिन होची से सब जिंस को ध्यान रखिबा दरकार तो द पेशेंट स्टेटमेंट ऑफ द पेन इज नेसेसरी फॉर कलेक्टिंग द
subjective data in the patient assessment जोटा कि हमर नर्सिंग केयर फर्स्ट बा नर्सिंग प्रोसेस रो फर्स्ट स्टेप ता असेसमेंट स्टेप ता जोटा कि इट इज फॉलोड अप बाय डायग्नोसिस तापर प्लानिंग तापर इंप्लीमेंटेशन तापर जाई हमर एग्जीक्यूशन तापर जाई हमर इवैल्यूएशन होची तो असेसमेंट नेला बेले हम जो सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करू से सब्जेक्टिव डाटा रे हमें पेशेंट रो जो पेन दा जो होची से जिंसटा को हमर असेस करा होची हैला that the patient statement of the pain is necessary for collecting the subjective data in the patient assessment process of the nursing process. Then next, which of the following is an example of the objective data? Objective data pain boli koda amaro important. I feel dizzy, I have a headache, blood pressure of 140 by 90 mmHg, I feel nauseous. Objective data रे हमें कौन कलेक्ट करू था? ऑब्जेक्टिव डाटा रे हमें कोन कलेक्ट करू थाउ सब्जेक्टिव डाटा रे हमें तो पेन विषय रे हमें डिस्कस करले हला आई फील डिजी आई हैव अ हेडेक आई फील नॉशियस एडा को सब होची से मानकर सब सिम्पटोमेटिक इवेंट उडा को हमें जते बडे ऑब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करू सेते बडे हमें पल्स रेट ब्लड प्रेशर एडा को सब देखा जाए ठीक अछि ब्लड प्रेशर पल्स रेट हार्ट बीट एडा को सब देखा जाए ब्रीथिंग रेट एडा सब देखा जाउची हला द ब्लड प्रेशर ऑफ द 140 by 90 mmHg ए जिंसटा को हमें एज एन ऑब्जेक्टिव डाटा भाबरे कलेक्ट करके रखी नेक्स्ट the step of the nursing process in which the nursing compares patient outcome with the expected goals is comparing the outcome with the goal हमर गोल गोटे थिबो हैला आ हमें जोडा असेस करिला परे हमें जोडा इंप्लीमेंट करिचे जो प्लानिंग दा तापर ताको इवैल्यूएट करला परे हमें जानिबा जे जो रिजल्ट हमर बाहरी करी आसीला जो रिजल्ट बाहरी की आसीला सेडा गोल सहित केते दूर जे मैच करछि से जिंसटा को हमें केमिति जानिबा जिंसटा को हमें जानिबा सेते बेले फर्स्ट रे हमें असेसमेंट करिबा सेकंड स्टेप रे डायग्नोसिस करिबा देन फाइनली प्लानिंग करिगिरी इंप्लीमेंटेशन करिबा इंप्लीमेंटेशन करिला परे तापर फाइनली हमर इवैल्यूएशन करिले हमें जानि परिबा जे हमर जो डाटा एक्वायर हला ता परे जो डाटा एक्वायर हला सेडा हमर एक्सपेक्टेड गोल सहित केते दूर जे कंपेरेबल केते दूर जे सेना हमर एक्सपेक्टेड से जिंसरा को जानि परिबा बुझि पाइलो हैला तो एडी आंसर कोन हि जिबे एबे तमे ताले को एबे सब आंसर को असेसमेंट नर्सिंग डायग्नोसिस इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन इट विल बी इवैल्यूएशन हैला इट विल बी इवैल्यूएशन देन चलो सो Ajira, last question for the day. Before applying a hot water bag to a patient, the nurse should कौन करिबा दरकार गोटे hot water bag ताको first apply करिबा पूर्वरु apply directly to the skin, wrap it in a cover before application, fill it with boiling water, applied over an open wound. अरे बाप रे open wound रे directly apply कर दबो माने से माने कटे घाव में नमक छिड़कना ए टाइप ऑफ सिचुएशन fill it with boiling water, it is not the appropriate method. Apply directly to the skin burn हेबार भी chances रहउची हैला wrap it in a cover before application जे कोन से प्रकार हमर जते बेले ट्रीटमेंट दिया होची हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो बा कोल्ड कंप्रेस हो हैला ताको फर्स्ट हमें गोटे स्किन माने गोटे रैप करबा दरकार गोटे क्लॉथ रेला कि हमर किछि हले गोटे सब्सटेंस रे क्लॉथ रे जनरली हमर रैप करला परे तापर अप्लाई करबा दरकार हैला तो रैप इट इन अ कवर बिफोर द एप्लीकेशन wrap it in a cover before the application ठीक अछि so that is it for today हैला आजि रो सेशन हमर एति की जाय थिला ठीक मु ए सब MCQs उडा को सब तमको WhatsApp ग्रुप रे हैला प्रैक्टिकल इमेज क्वेश्चंस किछि हां ठीक अछि एबे थ्योरी क्वेश्चंस रो डिस्कशन होछि ए वीक रे थ्योरी क्वेश्चंस रो डिस्कशन होबा तापर फॉलोइंग बाय नेक्स्ट वीक रे हम प्रैक्टिकल रो क्वेश्चंस रो मध्ये डिस्कशन करबा जोडे कि तमर 25 मार्क कंपोज करू हैला तो आई होप आज सेशन तुम मानको भलो लागि थिबो केमिति लागिला आज सेशन मते कमेंट सेक्शन रे निहाती जणाइबे आ आज ही पूरी आ गोटे 1-2 आवर परे पूरी आ गोटे सेशन हबो तो सेति मै बोली समस्त से सेशन टा को मध्ये लाइक करिके रखि थांतु चैनल रे ऑलरेडी शेड्यूल हे गिरी अछि से नोटिफिकेशन ऑन करिके रखि दै थांतु आई विल बी देयर वंस द तमरो जत्ते बेले मध्ये तमरो माने सेशन स्टार्ट हे जिवो यू विल बी नोटिफाइड ठीक अछि यू विल बी नोटिफाइड ओजे बीएससी नर्सिंग में यस कविता WhatsApp ग्रुप रे नाही WhatsApp ग्रुप रो लिंक ता तमरो दिया हे जाई दिबो ठीक अछि WhatsApp ग्रुप रो लिंक ता दिया हे जाई दिबो टाइम 2 o'clock ठीक अछि भारती 2 o'clock रे हमरो पका पकी स्टार्ट हे जिवो ठीक
So thank you so much everyone. Thank you for your active participation. I hope tama pai boli ajra class ta helpful rahi dibo. See you next time. Until then, thank you so much everyone. Jai Jagannath.